The Word of God, खुदा का कलाम 1 John chapter 3:8. आज का जो खुदा का कलाम है वो है The पहला Word of यूहन्ना God is 1 John chapter 3 verse 8. आज का जो कलाम है वो है पहला यूहन्ना उसका तीसरा बाब उसकी 8वीं आयत 1 John chapter 3 verse 8 पहला यूहन्ना तीसरा बाब उसकी 8वीं आयत से आज का कलाम 요한일서 3:8. 3장 8절입니다. Is it working? Okay. Okay, with one voice, let's read it together. आया मेरे हम आवाजों के कलाम Ready? Begin. He जो who जो does शख्स not गुनाह what is करता है वो sinful इब्लीस is से of the है devil. क्योंकि Because the इब्लीस devil has शुरू से been गुनाह sinning करता from है the beginning. करता रहा है Reason खुदा the का Son बेटा of God इसलिए जाहिर appeared हुआ to ताकि destroy इब्लीस के कामों devil's को work. मिटाए Amen. आमीन Okay. So, today's title is Why is Jesus the only way for us? आज का जो मजमून है वो है कि क्यों यीशु ही वाहिद रास्ता है 주제입니다. हमारे लिए 오늘의 제목은 왜 예수만이 유일한 길인가입니다. क्यों यीशु ही एक रास्ता है हमारे लिए क्यों यीशु ही एक रास्ता है आज का मजमून I'm so happy that our service is becoming more multi-ethnic. मैं इस चीज के लिए बड़ा खुश हूँ कि हमारी जो सर्विस है हमारी जो उसमें बहुत से 너무 감사합니다. मल्टी एथनिक आ रहे हैं Getting more and more. ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं 민족부 예배 उसके लिए मैं बहुत 사원진흥 शुक्रगुजार हूँ 없습니다. And I hope that no Korean will be spoken in this place. और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी कोरियन जुबान नहीं बोलेगा इस जगह पे 한국어를 말할 일이 없었으면 좋겠습니다. Because most of us are Korean. लेकिन हम 지금은 ज़्यादा तो 대부분이 कोरियन हैं 한국분입니다. But I hope that the multi-ethnics are more than Korean people here. और मैं उम्मीद करता हूँ कि मल्टी एथनिक पीपल लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं Today, the title, Why Jesus the Only Way for Us? आज का जो हमारा मजमून है वो है क्यों यीशु ही हमारे लिए रास्ता है This is Gospel Letter, chapter 4. ये है खुदा की अंजील में से चौथे बाब में से Every time I go to the field and I share this message, I ask something. जब भी मैं फील्ड में जाता हूँ तो मैं ये कलाम जब सुनाता हूँ तो मैं एक चीज पूछता हूँ With this question, title, इस सवाल से मतलब मैं पूछता हूँ 물어봅니다. which word is the most important word in this sentence? इन लफ्जों में कौन सी एक अहम लफ्ज है 단어가 가장 중요한가? इस जुमले में कौन सा एक अहम लफ्ज है And some of them Jesus, बहुत से लोग कहते हैं यीशु 예수님이 가장 중요한가요? and some of them way, बहुत से लोग कहते हैं रास्ता 길이란 말이 가장 중요하다고 합니다. and so on. और इसी तरह 네, 기타 등등 그렇습니다. But the answer is the only. पर जो जवाब है वो है एक 유일이라는 वाहिद 것입니다. 유일한 것이 가장 중요해요. 오직입니다. So, एक it's about uniqueness. ये है 유일성에 관한 것입니다. अलवियत से In religions, they speak diversity. मजहब में हम 종교는 पाते हैं 다양성에 कि 대해서 जैसे 강조합니다. अलवियत But in gospel, we are talking about the uniqueness. पर जब हम अंजील की बात करते हैं तो हम इसमें 복음에서는 अलवियत की बात करते 오직을 हैं 말하고 있습니다. 유일성을 말하고 있습니다. The gospel versus the religion. अंजील जो है वो मुखालिफ है 복음과 मजहब के 종교입니다. अंजील मुखालिफ
Can you say that? मजहब Today we don't have any translator for Japanese language. आज हमारे पास कोई जापानी जुबान में ट्रांसलेटर नहीं है Okay. 한국말로 in Korean. 한국말로 잘 이해하시기 바랍니다. People think gospel and religion they are all the same. लोग सोचते हैं कि अंजील और मजहब जो है ये यकसा है एक जैसे हैं Christianity is one of the religions. जैसा कि मतलब मसीहत भी एक मजहब है Yes, it's true. Christianity is a religion. हाँ ये सच है कि मसीहत जो है एक मजहब है But the content of the Christianity is not a religion. पर जो मजमू है मसीहत का जो मजमू है मसीहत का वो मजहब का नहीं है It's about the gospel. वो अंजील का मजमू है 복음이기 때문입니다. People think the purpose of the religion is to live in a good way or living doing good deeds. लोग सोचते हैं कि मतलब मजहबी जिंदगी जो है वो अच्छे काम नेक अमाल करने से होती है 다른 사람을 돕고 그런 좋은 일을 하기 위함이라고 합니다. But for the gospel, we have the different purposes. पर अंजील में जो है हमारे पास दूसरे मकासद मिलते हैं हमें अंजील में Gospel is not a religion and the life itself. अंजील जो है ये मजहब नहीं है बल्कि ये अपनी अंजील अपने आप में जिंदगी है This is leading you to possess the gospel, the life. अंजील जो है आपको बताएगी जिंदगी के बारे में 여러분을 인도합니다. So it's totally different. पर इस तरह ये अंजील जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है The religion, it gives you the prayer answers. मजहब जो है आपको जवाब देता है आपकी दुआओं का 기도 응답을 줄 수 있습니다. What you need in your life. 뭐 여러분 생활에 क्या आपको अपनी 필요한 것 जिंदगी 이런 में 것에 जरूरत है किस 답이 चीज 될 की 수도 있습니다. Which is necessary for your life. क्या चीज आपकी जिंदगी में 삶에서 필요한 जरूरी 것들 है 있잖아요. आपकी जिंदगी में But the gospel is giving you the life. पर जो अंजील है वो आपको 복음은 जिंदगी देती 여러분에게 है 생명을 줄 수 있습니다. The religion, it's made by man. मजहब जो है वो 종교는 इंसान से बना 사람에 है 의해 만들어지는 것입니다. But the gospel, it's by God. पर जो 그렇지만 अंजील है वो 복음은 खुदा की 하나님에 तरफ से 의해서 है 만들어진 것입니다. The religion, as a human being, we need to make an effort to find a way. मजहब में हम कोशिश करते हैं इंसान होने के नाते के रास्ते को जान सकें रास्ता बना सकें But for the gospel, God, He came to us. पर अंजील में खुदा हमारे पास आता है 하나님께서 우리를 찾아오신 것입니다. This is so, it seems similar, but it's totally different. पर ये लगता है एक जैसा है पर ये दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है This is by our own effort, but in religion, this is the gift. मजहब में आप अपनी कोशिश से 하나님이 주신 करते हैं 선물입니다. रास्ता ढूंढते हैं पर अंजील में आपको तोहफा है तोहफा So they are different. तो इस तरह ये एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ है In religion, you need to be like innocent मजहब में in terms of sin. 종교에 मजहब में ऐसा है कि आप जैसे नामालूम होते हैं 우리가 मासूम 순수해야 된다고. In terms of the sin. 그 죄에 मतलब में आप गुनाह से 짓지 않아야 된다고. मासूम होते हैं So we must try not to commit sins. तो हम इस तरह करते हैं कि हम कोशिश करते हैं मजहब में कि हम गुनाह ना कर सकें But in gospel, we say we have no power, ability to not make sins. तो पर अंजील में हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं हमारे में इतनी ताकत नहीं है कि हम गुनाह को अपनी जिंदगी में ना होने दें हमसे गुनाह होते हैं That's why God, He gave us
His only way to wash our sins. तो 그래서 इसलिए खुदा ने हमें 하나님께서 우리가 एक वो रास्ता दिया जिससे हमारे गुनाह 유일한 길을 धुल जाते हैं। 주셨습니다. Different. ये है 완전히 फर्क। 다릅니다. For me, I like this. मैं 저는 मेरे लिए 복음이 मैं ये पसंद 좋습니다. करता हूँ अंजील को। For this, I don't have any ability to do in this way. और मजहब में मेरे में 제가 할 इतनी वो नहीं है कि मैं कर सकूँ। In the Bible, we have many commandments, and we cannot follow all the commandments. हाँ तो जैसे कि बाइबल में हमारे पास बहुत से अहकामात हैं पर हम उनकी पैरवी नहीं कर पाते। That's why God gave us the Christ इस वजह से हमें खुदा ने 우리에게 मसीहा 그리스도를 주신 भेजा 것입니다. to give us the perfection of the law. ताकि हम उसकी कानून को 완성하셨습니다. पूरा कर सकें। मसीहा है कानून को पूरा करें। That's the difference. ये है वो फर्क। 그것이 복음과 종교의 차이입니다. So number 2, 두 번째입니다. तो नुक्ता नंबर 2 if you don't have the gospel, you will perish at all. अगर आपके पास 복음이 없으면 कलाम 사람은 अंजील 결국 नहीं है 망하게 됩니다. Because we have the original sin. क्योंकि हम हकीकी गुनाह में 모든 हैं। 사람은 원죄가 있기 때문입니다. Original. And finally we fall down and fail after all. Is there any In other better word to explain? The easy word? easy word Destruction. Huh? Destruction. destruction Destroyed. destroy Okay. तबाही तबाही Yeah. In life. Okay. हकीकी गुनाह Because all the human beings, we have the original sin. क्योंकि सब इंसानों में जो है वो हकीकी गुनाह था। In religion, we are talking about the sins that we are making in our daily life. मजहब में हम उन गुनाहों की बात करते हैं जो कि हम हर रोज गुनाह करते 죄를 हैं। 말합니다. That's why we are talking about this word, innocent. इसलिए हम इस वर्ड की बात करते हैं मासूम 그런 अल्फाज मासूम। 말합니다. But in the gospel, we are talking of the original sin. पर हम अंजील में जो बात करते हैं वो हकीकी गुनाह की बात करते 원죄를 हैं। 말합니다. This is not something that we can solve by our own selves. ये इस तरह नहीं कि कोई चीज हमने अपने से किसी चीज का हल किया हो। That's why we need God. इसलिए हमें 그래서 जरूरत 우리는 है 하나님이 खुदा की। 필요한 것입니다. His method, 하나님의 방법이 필요한 तरीकेकार 것입니다. से that's the Christ. वो है मसीहा उसका तरीकेकार। King, priest, and prophet. 왕, 제사장, बादशाह नबी और पादरी Because our fundamental problem of the human being, क्योंकि हमारा इंसानी होने के नाते हमारे बुनियादी मसले 문제가 थे। 있는 사람이기 때문에 the fundamental problems are Satan and sin and the separation. बुनियादी मसलों 그 में था 문제는 शैतान 하나님 떠난 문제, अलैदगी 사단의 문제, 그리고 और गुनाह। 죄의 문제이기 ये 때문에 हमारे बुनियादी मसले थे। So that's why we need the Christ. इस वजह से हमें 그래서 जरूरत है 우리는 मसीह 그리스도가 की। 필요한 것입니다. मसीहा की। Last Friday, I met one Nepali guy. पिछले जुमे में नेपाली शख्स से मिला। He's in the university and he's in the course of the PhD, doctor's degree. वो एक यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम है और वो डॉक्टरेट कर रहे हैं डॉक्टर। He seems so smart. वो 되게 बड़ा 똑똑했어요. अच्छा था। And I met him last time, and then I met him the second time, and it was the last Friday. और एक बार मुझसे पहले मिल चुका था लेकिन पिछले जुमे में मुझसे दोबारा मिला था। So for the first time, I explained the way of the salvation. तो पहली बार जब मैं उससे मिला था तो मैंने उसे बताया था नजात के 구원의 रास्ते के 길을 बारे में 전달했어요. And I explained the meaning of the Christ. और उसे मैंने बताया था मसीहा के मानी। And he said, it's been 15 years that I became Christian, and I never heard of the meaning of the gospel. मुझे 15 साल हो गया मैं मसीहत में हूँ पर मैं इससे पहले इस तरह के मसीहत के मानी नहीं था जानता।
and he said, I'm so thankful that I realized the meaning of the gospel. और मैं इस चीज के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मैं मसीहत के मायने को जान सका हूँ. And I figured out that he's now student, but he used to be a helper, like kind of teacher, to help the disabled children in Nepal. और मैंने जब उससे मिला तो मैंने जाना कि वो यहाँ पे तो ज़रे तालीम है पर नेपाल में जो है वो जो थोड़े मसले में होते हैं लोग उनकी मदद करता है किसी भी चीज़ की माजूद लोगों की. I've never told that he's a deacon or something. Yeah. And he's helping the disabled people, and he emphasized this kind of ministry to help disabled people. और उसने मतलब इस माजूरों की मदद करता और उसने मतलब ये अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया कि माजूरों की मदद कर. 장애인을 돕는 일을 강조했어요. 그런 사역을. But the thing is, he said, in fact, honestly, I want to become a pastor. और अच्छी चीज़ ये है कि वो कहता है मैं कोशिश करूँगा मैं ईमानदारी से पादरी बनूँ. Still, he want to become a pastor. अभी तक उसे दिल है उसका कि वो पास्टर बने. And he established a church with his own money in Nepal, and there's no pastor at the moment. और इस वक्त उसने अपने पैसों से नेपाल में चर्च बनाया लेकिन उसमें अभी तक कोई पास्टर नहीं है. So they are trying to find pastors there, and when they found someone, and always the pastor says, "How much can you give me?" तो वो मतलब बहुत से पादरियों को ढूंढा है जितनों को भी ढूंढा वो कहते हैं कि आप मुझे कितने पैसे देंगे हर महीना कितने पैसे देंगे. So that's why he is thinking about becoming a pastor. तो इस वजह से वो सोचता है कि मैं ही पादरी बनूँ. It's been 15 years that he became Christian. और 15 साल हो गए वो मसीहत में. Never heard of the meaning of the Christ. और इससे पहले उसने मसीहत के मायने को इस तरह दिखाया. This is the state of the churches worldwide. और ये है वो हालत पूरी दुनिया में चर्चों की. They don't know the meaning of the Christ and the original sin. वो नहीं जानते हकीकी गुनाह का. And they are seized by Satan. और वो फंसे हुए हैं शैतान के चुंगल में. And they are separated from God. और इसी तरह वो अलग हैं खुदा से. What is this? ये क्या है? Human's fundamental problem. ये है इंसानी बुनियादी मसले. And what do we need for this? और हमें इसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? The Christ. हमें ज़रूरत है मसीहा की. मसीह की. For sin, we need a priest. गुनाह के लिए हमें ज़रूरत है पादरी की. We need to kill animals. हमें ज़रूरत है जानवरों को मारने की. Because only by blood we can wash sins. और क्योंकि हमें सिर्फ जानवरों के खून से अपने गुनाहों को धो सकते हैं. So we need to kill animals today as well. तो आज भी हमें मतलब जानवरों को मारने की ज़रूरत है. But we don't have to. पर हमारे पास जानवर नहीं है. Jesus, he became the Christ, a real priest to die on the cross, and he washed all of our sins by one big sacrifice. और क्या कहते हैं मसीह जो है वो हमारी दुनिया में आया उसने अपना कुर्बानी दे दी हमारे तमाम गुनाहों के लिए. And he destroyed the force of Satan because he became the real king. और इसी तरह उसने शैतान की कुव्वत को तबाह कर दिया क्योंकि वो हकीकी बादशाह भी था. And he opened us the way because we were separated, and he said, I'm the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. और यीशु ने जो है वो रास्ते को बहाल किया क्योंकि हम खुदा से अलग हो गए थे. उसने कहा मैं रास्ता हूँ कोई भी मेरे बगैर खुदा के पास नहीं आता. मैं
나로 말미암자 그 하나님께로 올 자 없다고 하였습니다. But people, they don't know this. पर लोग 그렇지만 इस चीज को नहीं 사람들은 이 जानते 사실을 बुनियादी 모르고 मसला को 있습니다. Because they don't know this, their destination is hell. अगरचे वो इन चीजों को नहीं जानते तो उनकी जो मंजिल है वो है 가게 되는 दोज़ख 곳은 지옥입니다. Then, who can do the work of the Christ? तो वो कौन है जिसने मसीह का काम किया We have some qualifications, the conditions और इसमें हमारे पास कुछ शरायत 가기 है 위한 조건이 있습니다. to become a Christ. मसीह के लिए हमारे पास शरायत है कुछ He must not have any sins, जरूरी है कि उसमें 죄가 없는 गुनाह ना 분이어야 हो 합니다. which means he must not be the descendant of man. जिसका मतलब है कि वो एक इंसान में से ना हो Because Adam and Eve, they made sin from the beginning. क्योंकि आदम और हवा ने आगाज ही में शुरू में ही गुनाह किया था And as an evidence that he is God, he must rise again from the death. सबूत के तौर पे कि वो खुदा है जरूरी है कि वो दोबारा जी उठे 죽음에서 다시 살아나셔야 합니다. Because the ruler of the death is Satan. क्योंकि मौत का जो हुक्मरान है वो शैतान है 죽음을 잡고 있는 것이 사단이기 때문입니다. And he must come in this world as a flesh और जरूरी है कि वो बर्रा की सूरत में इस दुनिया में आए to die. और 왜냐하면 십자가에서 죽기 위해서. मुहा जाए So he is 100% God and at the same time 100% human being. और इस तरह वो 100% खुदा है और 100% इंसान है 사람이셔야 합니다. We have that three conditions to become the Christ. ये है हमारे पास वो तीन 이것이 शरायत जिससे 그리스도이기 वो 위한 세 가지 자격 조건입니다. And who did this? और वो कौन है जिसने ये किया Who was able to do the work of the Christ? कौन 누가 है 이 इतना 그리스도의 किसमें इतनी 일을 काबिलियत 하실 है 수 जो मसीह का काम करे 있었습니까? Jesus. Yeah. In history and as we see in the Bible, it was Jesus. हमें तारीख बताती है कि सिर्फ यीशु है जिसने ये किया 성경을 봤을 때 예수님이 그분이십니다. यीशु ने ये किया तारीख में बताती No one could do this work, किसी और ने 아무도 그 नहीं 일을 할 किया 수가 없습니다. but it was only the Jesus who did the work of the Christ. सिर्फ यीशु है जिसने मसीह का 유일하게 काम 그 일을 किया 행하신 분이십니다. That's why we have a reason to believe only the Jesus Christ. ये हमारे पास वो वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं सिर्फ यीशु मसीह है So that's the answer for the question today. ये है वो 그것이 जवाब 제가 जो कि आज के 처음 सवाल 드린 का है 질문에 대한 답입니다. Why is Jesus the only way for us? क्यों 왜 यीशु 예수만이 ही 유일한 सिर्फ 길이 एक रास्ता 되시는가? है हमारे लिए Because he is the Christ. क्योंकि वो 왜냐하면 मसीहा है 예수님만이 그리스도시기 때문에 We have many people who have the name of just Jesus. हमारे पास बहुत से लोग हैं जिनका नाम 예수라는 이름을 यीशु 가진 है 사람은 많습니다. We also have in Korea, हम कोरिया में भी हमारे पास 예수라는 이름을 가진 लोग 사람이 हैं 있어요. ऐसे जिनका नाम यीशु but है they couldn't do the work of the Christ. पर वो 그렇지만 그리스도의 일을 मसीहा 할 का 수 काम नहीं कर 없습니다. सकते But it was only the Jesus in the Bible, and he did the work of the Christ. सिर्फ बाइबल में बताती है यीशु है जिसने मसीहा का काम किया मसीह का काम किया I pray that you believe that Jesus is the Christ, and he is the only solution for your problems. मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ आपके लिए कि आप यीशु ही मसीह हैं और वही हमारे मसाइल का हल है सिर्फ यीशु And enjoy him every day. और हम उससे लुत्फ अंदोज हों हर रोज Let's pray. आए हम मिलकर दुआ करें Lord, thank you so much. खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं Thank you for leading us to understand the meaning of the Christ. खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं इसका मैं तेरी रहनुमाई के लिए ताकि हम तेरे नाम को जान सकें Give us
the faith that Jesus is the Christ. हमें खुदा बाप ईमान 예수님이 बख्शना 그리스도인 ताकि हम 사실을 ईमान लाएं कि यीशु ही 믿음을 मसीह है. 허락하옵소서. Lead us to believe Jesus is the Christ for our own problems. हम रहनुमाई करना खुदा बाप हमारी कि यीशु ही मसीह है और वो हमारे मसाइल का हल है, So that we can live a victorious life in this week. ताकि खुदा बाप इस हफ्ते खुदा बाप हम फतहमंदी से खुदा बाप हफ्ता गुजारें. 지금은 모든 문제 해결하신 예수 그리스도의 크신 은혜와 하나님의 영원하신 사랑하심과 성령의 내주인도 역사 충만하심이 오늘도 예수님이 그리스도란 이 사실을 붙잡고 내 삶에 적용하며 모든 문제 해결자 되신 이 그리스도를 전 세계에 증거하기 원하는 사랑하는 다민족부 우리 가족들 머리 위에 지금부터 영원토록 항상 함께 있을지어다. 아멘. 감사합니다. Thank you. Elder John. Elder John, we come up on the stage and give announcements.